नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस सवाल पर बात करेंगे जो हर नागरिक के लिए सबसे अहम है। मूल अधिकार क्या है? हम अक्सर अखबारों में, टीवी की बहसों में ये शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन असल में एक लोकतंत्र के अंदर इन अधिकारों का असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करते हैं? चलिए मिलकर इसे समझते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 3 को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है? इसे कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। असल में ये इस बात की गारंटी है कि राज्य या सरकार कभी तानाशाह न बन सके। ये एक तरह से नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले हम भारत का मैग्ना कार्टा समझेंगे, फिर 6 मूल अधिकारों पर बात करेंगे, उसके बाद इनकी मुख्य विशेषताएं, फिर इनके अपवाद और सीमाएं, और आखिर में हम इसकी आलोचना और महत्व को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, भारत का मैग्ना कार्टा और राज्य की परिभाषा। अधिकारों की बात शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अधिकार हमें किसके खिलाफ सुरक्षा दे रहे हैं। देखिए, मूल अधिकार मुख्य रूप से हमें किसी की भी मनमानी से बचाते हैं, और यहां उस संस्था का मतलब है राज्य। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में केंद्र और राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं, नगरपालिकाएं और यहां तक कि LIC जैसी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। मतलब ये सभी संस्थाएं अपनी हदों में रहें, यही मूल अधिकारों का असली मकसद है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारे 6 मूल अधिकार जो हमारी आज़ादी के असली स्तंभ हैं। यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव भी छिपा है। आइए देखते हैं। आपको शायद हैरानी हो कि शुरुआत में हमारे पास 6 नहीं बल्कि 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए एक बड़ा कदम उठाया गया। संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इस तरह हमारे पास बचे आज के ये 6 सबसे जरूरी मूल अधिकार। और ये हैं वो 6 अधिकार जिन पर हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा टिका है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि हर इंसान को बराबरी और सम्मान के साथ जीने का मौका देते हैं। चलिए इनमें से समानता के अधिकार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइसी के विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के विचार से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। ये इंसानों की नहीं बल्कि कानून की सरकार बनाता है। किसी भी लोकतंत्र की ये सबसे बुनियादी शर्त है। अब अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये बड़ा ही रोचक है। जरा सोचिए, ये कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। जब हमें बोलने की आज़ादी मिलती है तो हम शांति से इकट्ठा भी हो सकते हैं। इकट्ठा होंगे तो अपने संगठन या एसोसिएशन बना सकते हैं। फिर हम पूरे देश में कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यवसाय चुन सकते हैं। एकदम लॉजिकल है ना? लेकिन अगर इन सब में कोई सबसे अहम है तो वो है अनुच्छेद 21। सच कहें तो ये इन सभी अधिकारों की धड़कन है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका दायरा इतना बढ़ा दिया है कि अब ये सिर्फ शारीरिक रूप से जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ जीना, साफ हवा और पर्यावरण पाना और यहाँ तक कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मिलना, ये सब अब इसी स्वतंत्रता के दायरे में आता है। पर एक सवाल उठता है कि अगर कोई इन अधिकारों को छीन ले तो क्या होगा? यहीं पर अनुच्छेद 32 तस्वीर में आता है। ये हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक उपचार है। अगर अधिकार छिनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए ये 5 खास आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। ये विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार असल जिंदगी और कानूनी प्रणाली के भीतर काम कैसे करते हैं। क्या ये अधिकार पूरी तरह से असीमित हैं? बिल्कुल नहीं। संविधान एक बात बहुत साफ करता है, मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध यानी उचित सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ये हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ व्यक्ति की अपनी आज़ादी और दूसरी तरफ समाज की शांति और व्यवस्था। ये संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं चौथे भाग पर, अपवाद और सीमाएं।
आइए पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखते हैं कि ऐसी कौन सी खास स्थितियां हैं जहां देश का कानून इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। देखिए, संविधान खुद संसद को ये ताकत देता है कि वो सेना या पुलिस के अधिकारों को सीमित कर सके, ताकि उनमें अनुशासन बना रहे। इसके अलावा अगर कभी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और हाँ, मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान भी इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक और बहुत दिलचस्प पहलू है अनुच्छेद 22 का निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। आमतौर पर सजा तब मिलती है जब अपराध साबित हो जाए, जिसे हम दंडात्मक निरोध कहते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी पुराने अपराध की सजा नहीं है। इसका मकसद तो देश को किसी आने वाले खतरे से बचाना है। मतलब ये पूरी तरह से शक और एहतियात पर आधारित है, ताकि अपराध होने से पहले ही रोका जा सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आलोचना और महत्व। आइए देखते हैं कि संविधान के इस भाग 3 को लेकर क्या बहस होती है और समाज के लिए इसकी असली अहमियत क्या है। अगर हम आलोचकों की सुने तो वो कुछ बहुत ही वाजिब बिंदु उठाते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे ढांचे की भाषा इतनी जटिल है कि इसे वकीलों का स्वर्ग तक कह दिया गया है। एक और बड़ी शिकायत यह है कि इसमें काम का अधिकार या सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल नहीं हैं। और अभी हमने जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की, उसे भी कई लोग व्यक्तिगत आज़ादी के खिलाफ मानते हैं। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद हम इसकी ताकत को नकार नहीं सकते। यही वो ढांचा है जो हमारे देश को एक सच्चा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रूप देता है। ये न सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि हर एक नागरिक को इज्जत और व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीने का भरोसा दिलाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े होते हैं। एक सच्चा लोकतंत्र इंसान की पूरी आज़ादी और देश की पूरी सुरक्षा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बना सकता है? क्या ये रस्साकशी कभी खत्म होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Hey everyone, and welcome to today's Explainer. We're going to be unpacking one of the most powerful, absolutely transformative documents in modern history. We're looking at Part 3 of the Indian Constitution, a section so crucial it's often called the Magna Carta of India. So get ready, because we're about to explore the very foundations of individual liberty, human dignity, and democratic rights. Okay, let's dive right into this. The absolute biggest question we need to tackle today is simply, what are fundamental rights? And, why are they so necessary in the first place? Well, imagine a massive, all-powerful state on one side and just a single individual on the other. Fundamental rights, they are the ultimate shield for that individual. They literally protect citizens from state tyranny and ensure that we live under a government of laws, not of men. Without this shield, honestly, political democracy just wouldn't survive. So, here's our roadmap for today. 1. The Magna Carta of India. 2. The 6 fundamental rights. 3. Protecting rights through writs. 4. Restrictions and exceptions. And finally, 5. Criticisms and significance. Starting off with Section 1, the Magna Carta of India. Now, heavily inspired by the American Bill of Rights, these protections live in Part 3 of the Constitution, spanning Articles 12 through 35. But what exactly are they, legally speaking? Well, by definition, they are rights guaranteed by the Constitution that are deemed absolutely essential for your all-around development. And by that we mean your physical, intellectual, moral, and spiritual growth. They form the bedrock of the law of the land, making sure human dignity is always respected. But here's the thought. Who are we actually being protected from? Article 12 spells out this powerful entity known as the state. And actually, scratch the idea that it's just the big guys in charge. It's not just the union government and parliament. It includes state governments, local bodies like municipalities and village panchayats, and even statutory and non-statutory authorities. So whether it's a small local council or a massive national corporation like LIC, if any of these powerful agencies overstep, your fundamental rights are the legal barrier that stops them in their tracks. Moving on to Section 2, the 6 fundamental rights. Just look at the sheer breadth of human experience covered here. We've got the right to equality, making sure absolutely no one is above the law. The right to freedom, which protects your speech, your movement, and life itself. The right against exploitation, strictly abolishing human trafficking and forced labor. Then we have the right to freedom of religion, right alongside cultural and educational rights to fiercely protect minorities. And finally, the crucial right to constitutional remedies.
Now, originally, there were actually 7 rights, but as we'll see in just a bit, one of them had a pretty dramatic exit. Hold on, though, before we get too carried away, we really need to understand a vital caveat. These rights, they aren't absolute. The Constitution actually strikes a very deliberate, delicate balance between individual liberty and social control. The state can impose what they call reasonable restrictions to maintain things like public order, morality, or national security. So yes, you absolutely have freedom of speech, but you can't use it to incite violence, right? And ultimately, it's the courts that get to decide if a restriction is truly reasonable or not. All right, Section 3, protecting rights through writs. Having rights written down on paper is great, but what happens when they're actually violated out there in the real world? Well, if fundamental rights are the shield, Article 32 is the sword. Dr. B.R. Ambedkar famously called it the very heart and soul of the Constitution. Here's how it works. Both the Supreme Court and the High Courts can issue these special legal orders called writs. Under Article 32, the Supreme Court issues them exclusively to enforce fundamental rights across the entire territory of India. High courts, on the other hand, under Article 226, can issue them for fundamental rights and ordinary legal rights. So their scope is technically wider, but their geographic reach is limited just to their specific state. So let's look at the specific tools the judiciary has to work with. We've got 5 Latin writs. Habeas corpus literally translates to have the body of, and this is your protection against illegal detention. It forces authorities to physically present you in court. Mandamus means we command, and that's used to force a non-compliant public official to actually do their job. Prohibition forbids lower courts from overstepping their legal power, while certiorari is used to actively squash their illegal orders. And finally, quo warranto asks by what authority, stopping someone from illegally holding a public office. These are the active, breathing mechanisms of justice. Next up, Section 4, restrictions and exceptions. As powerful as this whole system is, sometimes survival requires a bit of flexibility. Remember when I mentioned there used to be 7 fundamental rights? Well, let's trace the fascinating journey of the right to property. Back in 1950, it was enshrined as a fundamental right under Article 31, but it just constantly clashed with the government's land reform and socialist economic goals. So, after decades of intense legal tug-of-war between the parliament and the judiciary, it was completely removed from Part 3 by the 44th Amendment in 1978. Today, it's still around, but merely as an ordinary legal right under Article 300A. It's just a prime example of how even these foundational rights can be reshaped. Now, aside from constitutional amendments, rights can also be temporarily suspended. During a declared national emergency, say due to war or external aggression, the freedoms granted under Article 19 are automatically put on pause. Furthermore, Article 33 allows Parliament to restrict the rights of the armed forces, police, and intelligence agencies just to ensure strict discipline. And under Article 34, if martial law, which essentially means military rule, is declared in any area to restore order, citizen rights are heavily curtailed and state actions are legally protected. And finally, Section 5, criticism and significance. Look, no constitutional document is completely perfect, so we're going to objectively look at what critics say about these rights and then balance that against the role they play in a democracy. Sir Ivor Jennings, a very prominent British constitutional scholar, actually called the Indian Constitution a paradise for lawyers. And the core critique here is that the language defining fundamental rights is just riddled with caveats, complex phrasing, and super ambiguous terms like public order. Critics argue that this immense complexity makes it incredibly hard for the average everyday citizen to understand or defend their rights without hiring some very expensive legal help. Building on that, let's impartially outline the other major criticisms out there. A huge one is the lack of socioeconomic guarantees. Unlike some other advanced democracies, Indian fundamental rights focus almost entirely on political and civil liberties, leaving out things like a guaranteed right to work or social security. Critics also point straight at those countless exceptions we just talked about, arguing the state can basically take away with one hand what the Constitution gives with the other. Plus, the ability to suspend rights during emergencies is seen by some as a pretty dangerous vulnerability. And honestly, relying on the Supreme Court for remedies, that's just too expensive and inaccessible for a vast majority of the population. But, and this is a massive but, despite all those valid critiques, the significance of these rights literally cannot be overstated. They are the very reason the nation functions as a secular, democratic state. They establish a true rule of law, making sure that absolutely no politician can act like a dictator. They are the ultimate safeguard for individual liberty. They explicitly protect the interests, religion, and culture of minorities, completely preventing the tyranny of the majority.
At the end of the day, they form the indispensable bedrock for social justice in an incredibly diverse nation. So the real takeaway here is that while the system is complex and definitely full of legal nuances, Part 3 remains the heartbeat of the Constitution. It answers the core question of what fundamental rights are and why they matter so much. But it also leaves us with a constantly evolving debate. As society progresses, should our fundamental rights be expanded to officially include social and economic rights, like guaranteed healthcare, housing, or employment? It's definitely a provocative thought to leave you with today. Thank you so much for joining me on this explainer. Keep questioning, keep learning, and I'll catch you next time.